हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंडमेड क्राफ्ट सोनाली। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 10th SST में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर के थोड़े नोट्स के हिसाब से सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर सब देख सकते हैं। फिर इसके बाद इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर मस्त पॉइंट वाइज दिए हैं फ्रेंड्स, पॉइंट वाइज में बहुत इजी होता है याद करना। और हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो पर कैपिटा इनकम है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे आपको MCQ मिलता है, क्वेश्चन मिलता है आपको बोर्ड एग्ज़ाम या कोई भी आपके एग्ज़ाम में। ये उसका पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ये जो यूनाइटेड अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी है, तो ये फ्रेंड्स इसका आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका मतलब इसका है ना, आपको एक चार्ट बना के इसमें आपसे टेबल बना के इसका ना क्वेश्चन पूछ देता है कुछ भी, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पब्लिक फैसिलिटीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, EMI, यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स भी पूछ लेता है कभी कभी, इसको भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और ये भी इसका ये जो फॉर्मूला है ये भी। उसके बाद है लास्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये अच्छे से हमें फ्लो चार्ट में एक है क्विक। और हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय फर्स्ट इट्स पर कैपिटा इनकम, सेकंड इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, थर्ड हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, और फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। तो फर्स्ट है बांग्लादेश, सेकंड श्रीलंका, थर्ड नेपाल, फोर्थ पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। Third, assume there are 4 families in a country. The average per capita income of these families is rupees 5,000. If the income of 3 families is rupees 4,000, rupees 7,000, rupees 3,000 respectively, what is the income of the 4th family? तो बस इसका ऑप्शन है फर्स्ट 7,500, सेकेंड 3,000, थर्ड 2,000, फोर्थ 6,000। इसका आंसर है 6,000। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, इसको अब अच्छे से देख लेंगे, इसमें बहुत सारे। फोर्थ क्वेश्चन, what is the main criteria used by the World Bank in classifying different countries? What are the limitations of this criteria, if any? आंसर है per capita income is the main criteria used by the World Bank in classifying different countries. The limitations of this criteria are: first point, per capita income is useful for comparison but it doesn't show the distribution of income. Second, it also ignores other factors such as infant mortality rate, literacy level, healthcare, etc. Third, per capita income does not give the true picture as there is a huge population which does not earn at all, like children and the senior citizen, but they are also included while calculating per capita income. National income rises, but its distribution make the rich richer and poorer. Fifth, in what respects is the criteria used by the UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank? इसका आंसर है World Bank only uses per capita income for measuring development while UNDP uses many other factors like infant mortality rate, healthcare facility, education level, which help in improving the quality of life and helps in making the citizen more productive. As per HDI 2014, India's rank is 135. On the other hand, the World Bank uses per capita income as the only criteria for measuring development and classifying the countries as rich and poor. Per capita income is useful for comparison. It does not tell us how income is distributed. Sixth question है, why do we use averages? Are there any limitations to their use? Illustrate with your own example related to the development. इसका आंसर है
First point, we use averages because they are useful for comparing different quantities of the same category. For example, to compare the per capita income of a country, averages have to be used because there are differences in the income of the diverse people. Limitations on the use of the averages. First, this does not show the distribution of things between people. Second, for example, is a country has a very high per capita income, then we can't say that citizens living in that country are very rich because we don't know about the distribution of wealth in that country. Some people might be richer while other people are very poorer in that country. Seventh question. Kerala, with lower per capita income, has a better human development ranking than Haryana. Hence, per capita income is not a useful criteria at all and should not be used to compare states. This is true because the literacy rate, infant mortality rate, healthcare facilities, etc. are better in Kerala in comparison to Haryana. The per capita income is only calculated by calculating the average income of the state irrespective of any other factor. Eighth question. Find out the present sources of energy that are used by the people in India. What could be the other possibilities 50 years from now? Answer है the present sources of energy that are used by the people of India are electricity, coal, crude oil, cow dung and solar energy. Other possibilities 50 years from now could include ethanol, biodiesel, nuclear energy and better utilization of wind energy, especially with the emitting out. नाइन्थ क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाई इज़ द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? इसका आंसर है द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट बिकॉज डेवलपमेंट नीड बी इन tandem with the future. If natural resources are not sustained, then development will stagnate after a point of time. Exploiting resources unethically will ultimately undo the development that a country may have achieved. This is because in the future, those resources will not be available for the future progress. 10th question है, the earth has enough resources to meet the needs of all but not enough to satisfy the greed of even one person. ये भी important quote है friends. How is this statement relevant to the discussion of development? Discuss. Answer है the earth has enough resources to meet the needs of all but not enough to satisfy the greed of even one person. This statement is relevant to the discussion of development since both resources and development go hand in hand. For the sustainability of development, the maintenance of resources is also crucial. As this statement claims, the earth has enough resources, renewable and non-renewable, to satisfy everyone's needs. However, these need to be used to keep the environment protected and clear so that a balance of production and use is maintained and shortages are avoided. 11th question. List a few examples on environmental degradation that you may have observed around you. Answer. A few examples of environmental degradation are: first, deforestation; second, soil erosion; third, falling levels of ground level; fourth, depletion of the ozone layer and combustion from automobile causing extreme air pollution; fifth, water pollution. Friends, ये था 11th question. इसके बाद 12th question. For each of the items given in the table 1.6, find out which country is at top and which is at the bottom. तो यहाँ पास ये टेबल दिया हुआ है फ्रेंड्स, हमारे बुक में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं NCERT. फर्स्ट क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम इन US डॉलर. बॉटम कंट्री है म्यांमार. सेकेंड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. टॉप कंट्री श्रीलंका, बॉटम कंट्री म्यांमार. लिटरेसी रेट फॉर 15 ईयर प्लस पॉपुलेशन. तो टॉप कंट्री है श्रीलंका, बॉटम कंट्री बांग्लादेश. फोर्थ, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स. टॉप कंट्री श्रीलंका, बॉटम कंट्री पाकिस्तान. HDI रैंक इन दी वर्ल्ड. टॉप कंट्री श्रीलंका, बॉटम कंट्री नेपाल. तो यहाँ पास ये टेबल का पूरा आंसर है, अच्छे से आप देख सकते हैं. 13th question. The following table shows the proportion of adults aged 15 to 49 years where BMI is below normal.
than 18.5 kilometer square in India. It is based on a survey of various states of or the year 2015 to 2016. Look at the table and answer the following questions. फ्रेंड्स यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द न्यूट्रिशन लेवल्स ऑफ द पीपल इन केरला एंड मध्य प्रदेश. इसका आंसर, द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पीपल of Kerala is quite higher than the people, both males and females, of Madhya Pradesh. Their ratio of the undernourished is less than that of Madhya Pradesh. Second question है, can you guess why around 1/5 of people in the country are undernourished even though it is argued that there is enough food in the country? Describe in your own words. Answer है, there is enough food in the country even then 40% of the people in the country are undernourished because, first point, a large number of people are so poor that they cannot afford nutritious food. Second, in most of the states the public distribution system does not function properly and the poor people cannot get cheap food items. Third, there is a lack of educational and health facilities in many parts of the country, so many people remain backward and poor. As such, they are unable to get nutritious food. फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पूरा ये चैप्टर ख़त्म होता है. हम देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड्स कर दे रही हूँ जो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आते ही हैं एग्ज़ाम में. आप देख सकते हैं अच्छे से. फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए. और मैं ऐसे बहुत सारे अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन से वीडियो लाने वाली, तो इसलिए मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको और कौन सी वीडियो चाहिए. तब तक के लिए बाय बाय.